हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लर्निंग विद रोश चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ A1 रोश चौहान मैथ्स लर्निंग। आई एम रोशनी चौहान, MSc मैथमेटिक्स, also B.Ed, and this is my channel Maths Learning with Rosh Chauhan. You can clear your all maths concept in this channel. Please like, share and subscribe it. And you can clear your maths concept, and also maths of our upper classes are available. This is my contact number. You can contact me. And thank you for continuously watching my all videos. And if you have any query, please comment me. Today's topic is electricity. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के अदर पॉइंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर. ओके, for first point is there are two methods of joining the registers together. registers को join करने के आपके पास two method होते हैं. okay, now a electric circuit in a which three register having resistance R1, R2 and R3 respectively are joined end to end called registers are in connected in series. अगर आपके पास 3 रजिस्टर्स है जिनके आपने नाम दे दिए R1, R2 एंड R3, देन अगर आप उनको कैसे ज्वाइन करोगे, एंड टू एंड, यानी एक के बाद एक को ज्वाइन करते जाओगे, देन इट इज़ कॉल्ड रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इट इज़ R1, R2 एंड R3. एक के बाद एक कनेक्टेड है, इसके एंड पर दूसरा कनेक्ट है, इसके एंड पर थर्ड वाला कनेक्टेड है. इट इज़ कॉल्ड सीरीज. रजिस्टर्ड आर कनेक्टेड इन सीरीज. The next is a combination of registers in which three registers are connected together between points X and Y. Here the registers are said to be connected in parallel. Look at this figure. यहाँ पर ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y. इस पॉइंट में इस तरह से पैरेलल ये रजिस्टर 1, 2 एंड 3 जुड़े हुए हैं, जिसे आप कह सकते हैं पैरेलल सीरीज. सो रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट. नाउ रजिस्टर्स इन सीरीज. द वैल्यू ऑफ द करंट in the emitter is the same independent of its possible position in the electric current. It means that in a series combination of registers, that current is the same in every part of the circuit, or the same current though each register. ओके, देख सकते हैं आप, जैसे कि सीरीज में है, इसमें जो करंट हो रही है वो इक्वल फ्लो हो रही है और साथ ही साथ वो सेम करंट भी फ्लो हो रही है. ओके, यू कैन लुक एट दिस फिगर. द नेक्स्ट पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ V1, V2 and V3. So that the total potential difference across a combination of resistor in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor. It means V is equals to V1 plus V2 plus V3. Okay. Now applying the Ohm's law to an entire circuit, then we get what is Ohm's law. You know that V is equals to IR. V is equals to IR is called Ohm's law. So V1 equal to IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equal to
IR3. Then if we add to according this equation, we can write IRS. S means series, okay, and IR1 plus IR2 plus IR3. So I is common from the both side. So we get that resistor in series is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, we get the total resistance in series. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्टर्स इन पैरेलल. The arrangement of three resistors joined in the parallel with the combination of cell. Cell के साथ ये parallel में join हो जाएंगे. And you can look at this figure. This is the parallel series of resistors and with the cell. Okay. And the next point is the total current I is equal to the sum of separate current through the each branch of the combination. ये जो I यहाँ से आ रही है ये इन दोनों में क्या हो जाएगी, सेपरेट डिवाइड हो जाएगी. सो इट मीन्स द टोटल करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3. इस डिवाइड में जो तीनों की करंट में जो डिवाइड हुई है करंट, उसका ऐड ही क्या होगा, हमारी टोटल करंट होगी. नेक्स्ट, by applying Ohm's law to the parallel combination of the resistor, we know that I is equals to V upon R. RP means the resistance on parallel series, parallel. Okay. So, you can look at here, I1 is equals to V upon R1, I2 is equals to V upon R2 and I3 is equals to V upon R3. When we add it, so V upon Rp is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Then V is a common from both sides. Then we get only 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. जो पैरेलल सीरीज में हमारे पास रजिस्टर्स होंगे वो रेसिप्रोकल में ऐड हो जाते हैं. ओके. नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. The reciprocal of the equivalent, ये है equivalent resistance of a group of resistance joined in a parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance. Separately जो होंगे उनका reciprocal का sum ही हमारे पास resultant resistance होगा. Subscribe it and share it. I think you enjoying this video. Now the point is heating effect of electric current. A battery or a cell is a source of electric energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स हमारे पास बैटरी और सेल होते हैं. द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल difference between its two terminal that set as an electron in motion to flow the current through the resistance or a system of a resistors connected to the battery. क्योंकि बैटरी से जो भी कनेक्टेड होता है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी हमारी करंट मूव करती है, और करंट मूव केवल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही मूव करती है. नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू बी कीप एक्सपेंडेड हिज एनर्जी. करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स अपनी एनर्जी को क्या करता है, एक्सपेंडिंग करता है. अ पार्ट, फर्स्ट पार्ट में वो क्या करता है, सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम्ड इनटू अ यूजफुल वर्क. फर्स्ट पार्ट में वो क्या कर सकता है, उसे वर्क में कन्वर्ट कर सकता है. जैसे इलेक्ट्रिक फैन होता है, अगर आप उसे एनर्जी दोगे तो वो रोटेट होने लगेगा. नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी में बी एक्सपेंडेड द हीट, और सेकंड देगा हीट में. ओके, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, किसी भी गैजेट का टेम्परेचर रेज करने के लिए, जैसे हीटर. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम. अगर आप इलेक्ट्रिक फैन को लंबे समय तक यूज़ करते रहेंगे तो वो भी क्या होने लगेगा, वार्म होने लगेगा, यानी गर्म होने लगेगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी. वहाँ पे क्या होगा, वो केवल बैटरी से कनेक्टेड होगा. एंड द सोर्स एनर्जी continually get dissipated and entirely
इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को जब वो हीट देने लगती है, सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था, तब क्या हो जाता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर। आपने देखा होगा हीटिंग इफेक्ट के जो एग्जाम्पल हैं, दैट इज अ इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन। आपने जैसे देखा होगा, इसे आप इलेक्ट्रिक चार्ज करते हो या फिर स्विच ऑन करते हो तो इसकी क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप आयनिंग कर सकते हो अगर आपका आयरन का बेस हीट हो जाए, हीट अप हो जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट इज द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज, जो पावर आती है सोर्स से, दैट इज P इज इक्वल टू V Q अपॉन T, एंड Q अपॉन T इज ऑल्सो I, सो वी कैन राइट इट VI. नेक्स्ट, the amount of heat produced in time t, the amount of heat produced in time t is H is equals to VIT. Applying the Ohm's law in here, we know that H is equals to I square upon RT. Ohm's law को हम अप्लाई करेंगे. What is Ohm's law? Ohm's law is equals to V is equals to IR. V is equals to IR. This is known as a Joule's law of heating. This is H is equals to I square. RT is called a Joule's law of heating. Now, the law implies that, which law? Joule's law. The heat produced in a resistor is, first, it is directly proportional to the square of the current. You know that this formula, H is equals to I square, means it is the directly proportional to the square of current. Next is directly proportional to the resistance for a given current. ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके लिए, जो गिवन करंट है. एंड द थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एंड द थर्ड इज टाइम भी हीट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन प्रैक्टिकल सिचुएशन. इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, when an electric appliances is connected to a known voltage source, अगर आप किसी से कनेक्टेड हैं, then H is equals to I square RT is used after calculating the current through it. बाद में हमें करंट को यूज़ फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करना होता है. H is equals to I square RT. Okay, and the relation is I is equals to V upon R. ये जो रिलेशन है I का, करंट का, ये यूज़ किया जाएगा. चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलें, जिससे आपके सीखने का सीक्वेंस बना रहे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द फर्स्ट पॉइंट इज द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनवर्टिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. In many cases, it is undesirable as it convert useful electric energy to heat. क्योंकि कई बार हमें उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और अगर हम इसे कंटिन्यूसली इसको अप्लाई करते रहेंगे या स्विच ऑन रखेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, in electric circuit, the unavoidable heating can increase the temperature of the component and alter their properties. कई बार हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम अवॉइड कर लेते हैं या किसी चीज़ को हम नहीं अवॉइड कर सकते, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, अपने आप में इंक्रीज़ हो जाए, उसकी जो हीटिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, जैसे कि एक फेज है द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, electric oven, electric kettle, electric heater are the some
आर द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन अ जूस हीटिंग। ये सारे अप्लाइंसेस जो हैं ये जूस हीटिंग पर ही डिपेंड है, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या प्रोड्यूस करती है? लाइट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो उसके मेटल्स हैं वो लाइट को एमिट करते हैं। एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, लाइक अ फिलामेंट। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। एंड गेट अ वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होकर क्या करता है? एमिट करता है, जिस वजह से हम बल्ब ग्लो हो जाता है। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, सो इट इज़ 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ the bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to be a prolong to the life of filament। बल्ब के अंदर ये दोनों गैसेस को भरा जाता है, जिस वजह से जो फिलामेंट की लाइफ है बहुत लंबे टाइम तक रहती है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अ जूल हीटिंग इज फ्यूज। फर्स्ट इज फिलामेंट, सेकेंड इज फ्यूज। यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द फ्यूज इज प्लेस इन अ सीरीज इन द डिवाइस में फ्यूज को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रखेंगे। द फ्यूज यूज फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस, जो फ्यूज होते हैं वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी आपके घर में यूज़ किए जाते हैं। आर रेटेड जो होते हैं दैट इज़ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक आयरन, जो आपकी प्रेस होती है घर में जिससे आप आयरन करते हैं अपने कपड़ों में, विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर, जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की होती है। इट ऑपरेट 220 वोल्ट में ये ऑपरेट की जाती है। एंड अ करंट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई 220 एम्पियर दैट इज़ 5.54 एम्पियर करंट इसके लिए यूज़ होगी। सो विल बी फ्लो इन द करंट, सो इन दिस केस 5 एम्पियर फ्यूज मस्ट बी यूज। तो इस आयरन के लिए हमें 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो पावर। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज पावर। So P is equals to VI. P is equals to I square R, so that we can write it V square R. SI unit of electric power is watt. We can denote it by the capital W. 1 watt is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operate at the potential difference of 1 volt. We can write it 1 watt is equals to 1 volt multiplied by 1 ampere. It means 1 watt is equals to 1 VA. Next point. The unit watt is very small. So in this case, in actual practice, we use a much larger unit. हमें बहुत बड़ी unit watt की use करनी होती है. It is called kilowatt. So 1 kilowatt is equals to 1000 watt. Now, last point is electrical energy is the product of power and time. The electrical energy is the product of power and time. The unit of electric energy is watt hour. So, you know that watt is a very small, so we can write 1 kilowatt is equals to 1000 watt into, in a 1 hour is 3600 seconds. So we get that 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay, so it is electric energy. Hello my dear friend, thank you for watching me and thanks for your love and support. This is my channel Maths Learning with Rosh Chauhan. You can contact me and please like, share and subscribe the channel and also comment. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।